स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सैटेलाइट टेलीफोनी एंड सेलुलर नेटवर्क्स का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्चुअल लैन के बारे में देखेंगे डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द वर्चुअल लैन। सो इन दैट फर्स्ट विल सी द बेसिक्स व्हाट इज बाय वर्चुअल लैन एंड देन विल take the examples on this virtual LAN so that this virtual LAN concept is clear to you. So virtual local area networks or virtual LANs are the logical group of computers that appears to be on the same LAN irrespective of the configuration of the underlying physical network. तो virtual area networks में जो भी logical groups of computers है, जैसे यहाँ पे LAN 1 है, LAN 2, LAN 3 है. So this is nothing but the logical group of computers so that can be appear on the same LAN irrespective of the configuration. ठीक है, तो नेटवर्किंग में हमने देखा कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, रिंग टोपोलॉजी, ओके, बस हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ देयर. ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज़ किया है, बट ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस आर कनेक्टेड इन अ फिजिकल LAN, so that forms one logical group of computer. So the network administration or network administrator partitions the network to match the functional requirement of this virtual LAN, so that each VLAN comprises a subset of ports on a single or multiple switches or the bridges. So by using this network administration, it will partition the network according to this VLAN or according to the requirement. So by using the multiple switches or the bridges. तो जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है, this is the LAN 1. So this is the one set of this logical group. That is the second set of logical group, that is physical LAN 2, and the third one is the physical LAN 3 is there. And these group of computers are connected through a switch or bridge. So that will act as by a network administration, or that is partition of these physical LAN 1, 2 and 3 with the help of this network administration. So this allows the computer and devices in VLAN to communicate in a simulated environment as it is separate LAN. ओके, तो ये वर्चुअली जो LANs है वो separated है. दिस इज LAN 1, LAN 2 and LAN 3 by the logical groups of computers. So these different LANs are separated virtually by using this network administrator. So that forms a simulated environment that can communicate the different LANs. So LAN 1 can communicate with the LAN 2 computers, LAN 2 can communicate with the LAN 3 computers, and vice versa. Means LAN 3 can communicate with the LAN 1 by using these switches or the bridges. So here LAN is denoted as a red color, in LAN B is denoted by the green color, and this LAN C is denoted as a blue color. So here this LAN A computer can be connected to the LAN B, means data can be sent from this LAN 1 computer to the LAN 2 computer. Also the data can be sent from this LAN 1 computer to the LAN 3 computer, that can be seen by the red color. Also this LAN B computer can communicate with the this LAN 1 computer like that. So that is the configuration in the virtual LAN, and that configuration is on the base of network administrator, means the software configuration is there in the virtual LAN. Means these logical groups of computer, in short, are separated in their configuration according to the partition that is made through a software. Then we'll see some of the main features of this virtual LAN. First one is the virtual LAN forms a subnetworking group together devices on separate physical LANs. तो जैसे हमने देखा कि LAN 1, LAN 2, LAN 3 में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए, so that forms a different physical LANs. So they are separated. So these separated physical LANs are grouped together
so that forms a subnetwork of a VLAN. Second one, VLAN help the network manager to segment the LAN logically into the different broadcast domain. So VLAN will also help the network manager to segment these different logically LANs, LAN 1, LAN 2 and LAN 3 to form a different broadcast domain. Third one, VLAN function at layer 2, that is the data link layer of OSI model. तो वर्चुअल लैन का जो फंक्शन है तो वो लेयर सेकंड में दैट इज़ अ डेटा लिंक लेयर ऑफ अ OSI मॉडल. नेक्स्ट, देयर मे बी अ वन और मोर नेटवर्क ब्रिजेस और स्विचेस फॉर टू फॉर्म द मल्टीपल इंडिपेंडेंट वर्चुअल लैन. तो वर्चुअल लैन कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क्स ब्रिजेस और द स्विचेस का यूज़ होता है. ठीक है. So it requires the one or more bridges or switches depending on the requirement of this virtual LAN. So using virtual LAN, network administrator can easily partition a single switch network into the multiple network depending on the functional and security requirement of their system. ठीक है. तो वर्चुअल लैन के केस में जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, दे पार्टिशन दिस डिफरेंट लैंस, लैन 1, लैन 2 एंड लैन 3 यूजिंग अ सिंगल स्विच नेटवर्क इनटू द मल्टीपल नेटवर्क. ठीक है. तो मल्टीपल नेटवर्क में इसको फॉर्म किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल एंड द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वन, VLAN eliminate the requirement of to run the new cables or reconfiguring physical connection in present network और इन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये जो वर्चुअल लैन यहाँ पे बना है ये बाय यूजिंग नेटवर्क पार्टीशन से बना है दैट यूजेज द सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो इसके लिए कोई फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर आप न्यू कंप्यूटर्स इस लैन में ऐड करते हो, सपोज लैन 1, लैन 2 एंड लैन 3 में न्यू कंप्यूटर्स अगर हमने इंस्टॉल किए, सो दैट डजंट रिक्वायरमेंट फिजिकल connection because these different LANs are separated logically in group of computers. So VLAN helps a large organization to repartition devices aiming improve traffic management. तो VLAN की वजह से जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है दैट कैन बी इम्प्रूव. नेक्स्ट वन, VLAN also provides the better security management, allowing the partition of devices according to their security criteria. तो ये जो partitions बनाए अलग अलग LAN 1, LAN 2 and LAN 3, so that can be a differ according to the security criteria. So VLAN also provides the good security management. Next feature is VLAN are more flexible than physical LAN since they are formed by logical connection. ठीक है. तो ट्रेडिशनल मेथड में जो वर्चुअल लैन था और सिंपल लैन टेक्नोलॉजी था उसमें फिजिकल लैन मीन्स फिजिकली ऑल दिस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर. सो बट इन केस ऑफ दिस VLAN टेक्नोलॉजी दिस कनेक्शन आर ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल. सो दिस एड्स is quicker and cheaper reconfiguration of devices when the logical partition needs to be changed. ठीक है. तो अगर आपको इसमें न्यू कंप्यूटर्स या कुछ कंप्यूटर्स आपको अलग अलग पार्टीशन से या लॉजिकल ग्रुप से अगर रिमूव करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है. ओके, रिकॉन्फ़िगरेशन करना है. या अगर नया कंप्यूटर आपने यहाँ पे ऐड किया है अलग अलग लैंस में, ठीक है, so only the reconfiguration of that computer will be needed in case of this virtual LAN. ठीक है. बट फिजिकल LAN अगर यहाँ पे यूज़ होता तो आपको यहाँ पे कनेक्शन करने पड़ते अलग अलग कंप्यूटर्स में. so that these different LANs will communicate with each other. So these are the main features of this virtual LANs. Then we'll see the types of virtual LAN. So virtual LAN is mainly divided into the three types. First one, protocol VLAN. Second one, static VLAN, and third one is the dynamic VLAN. So one by one we take the introduction of this type of VLAN. First one is the protocol VLAN. So here the traffic is handled
बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल यूज। तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है, वही प्रोटोकॉल इसका जो ट्रैफिक है उसको हैंडल करेगा, ठीक है। एंड अ स्विच और ब्रिज सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट्स फॉरवर्ड और डिस्कार्ड द फ्रेम कम टू इट बेस अपॉन द ट्रैफिक प्रोटोकॉल। तो इसमें जो ब्रिजेस एंड द स्विचेस यूज होंगे टू कनेक्ट द डिफरेंट लॉजिकल LANs, so that separates means forwards or discard means remove the frames coming to it based upon the traffics on a protocol, ठीक है। Second type of VLAN is a port based VLAN, so it is also called as a static VLAN. So here the network administrator assign the ports on the switch or the bridge to form the virtual network. तो इसमें जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, तो वो पोर्ट्स असाइन करता है स्विच एंड ब्रिज में, सो दैट फॉर्म्स द वर्चुअल नेटवर्क। थर्ड वन इज द डायनेमिक VLAN. Here the network administrator simply defines the network membership according to the device characteristics. So these are the three main types of virtual LANs. So to understand this VLAN concept, we take one simple example. So in that there are three offices, office 1, office 2 and office 3 is there, and the three switches are used. Switch 1, switch 2 and switch 3 is used. So using these switches the different computers are connected, and all these switches are logically connected with each other. So suppose our company has the three offices, office 1, office 2 and office 3. All offices are connected with the backlinks, so all these offices are connected together. The company has the three departments, that is development, production and administration. So the first one is the, suppose administration, this is the production and this is the development. So the development computer has a department has a 6 computers, and the production department has suppose 3 computers, and the administration department also has a 3 computers. Then each office has 2 PCs from development department and 1 from both the production and administration department. Like this is the administration department computer, this is the production department, and this is the development department computers. These are connected through a switch in office 1. So administration and production department have a sensitive information and needs to be separate for the from the development department. तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में टोटल बैकअप होगा, ठीक है, या उसमें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंस, ठीक है, एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आल्सो अ सेंसिटिव department and it has the sensitive information, so that needs to be separate from the development department. So for that with the default configuration all the computers share the same broadcast domain, so development department can access the administration or production department resources. So this VLAN will create a logical boundaries over the physical network, and assume that we create a 3 VLANs of our network and assign them to the related computers. तो यहाँ पे वर्चुअल लैन क्रिएट किया गया है मीन्स बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर that for office 1, office 2 and office 3. So all the computers can connect it with together, and this admin department can send the data to the production department can send data to the development department. So these logical boundaries of this virtual LAN will be over this all the physical network. So that is the simple example to understand this VLAN concept. Then we'll see some of the advantages of VLAN. So first, solve the broadcast problem. ठीक है, तो VLAN टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी डेटा या फाइल्स या इंफॉर्मेशन हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. सेकंड वन, रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन. ठीक है, तो इसकी वजह से जो ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो साइज़ है दैट कैन ऑल्सो बी
reduced by using this virtual LAN. थर्ड वन, अलो अस टू ऐड द एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, तो एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वर्चुअल लैन. नेक्स्ट वन, मेक द डिवाइस मैनेजमेंट ईजियर. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि वर्चुअल लैन में अगर आपको न्यू सिस्टम ऐड करना है या नया कंप्यूटर ऐड करना है या रिमूव करना है, सो ओनली द कॉन्फ़िगरेशन इज़ गेट चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है सो दैट दैट डिवाइस विल बी एडेड इनटू द LAN. So that's why the device manager or device management will be easier in case of this virtual LAN. Next one, allow us to implement the logical groups of devices by function instead of location. ठीक है, तो जो भी devices connect है through this different LAN, so that can be segregated or separated by using their function इंस्टेड ऑफ देयर लोकेशन. ठीक है, तो लोकेशन के अलावा यहाँ पे हम उसको फंक्शंस पे भी सेपरेट आउट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को, लाइक दैट. सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द वर्चुअल लैन टेक्नोलॉजी. सो दैट विल एंड द यूनिट 3 पार्ट D. Then we start with the unit 4. So in that again there are 3 parts. Part A, that is introduction to the network layer. Part B, that is routing, and the part C is the next generation IP, जिसमें हमें ICMP4, IPv4, IPv6 इनका डिटेल स्टडी करना है. So first we start with the A part, that is introduction to the network layer. So first we'll take the introduction to the network layer. So layer 3 in OSI model is called as a network layer. ठीक है, तो OSI मॉडल हमने यूनिट 1 में डिटेल स्टडी किया है. तो जो थर्ड लेयर है OSI मॉडल का, दैट विल बी अ नेटवर्क लेयर. सो द नेटवर्क लेयर मैनेजेस द ऑप्शन pertaining to the host and network addressing, manages the sub networking and the inter networking. ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का जो मेन फंक्शन है वो जो सब नेटवर्क्स है उनको मैनेज करना एंड इंटर नेटवर्किंग फॉर द डेटा ट्रांसफ़र. सो द नेटवर्क लेयर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राउटिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन विद इन और आउटसाइड अ सबनेट. ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो पैकेट्स या फ्रेम्स है, ठीक है, वो ट्रांसमिट करना. ठीक है, मीन्स राउटिंग करना बाय यूजिंग द डिफरेंट राउटिंग algorithms. So this network layer will send out the packet from sender or from transmitter toward the receiver, that is from source to the destination, that is within a network or from outside network to the different other networks. ठीक है, तो outside network से भी जो भी डेटा है वो रूट कर सकते हैं अलग नेटवर्क में. ठीक है, तो ये सब फंक्शनलिटीज़ है नेटवर्क लेयर के. So the two different subnet may have different addressing scheme. They are non-compatible addressing types, and same with the protocol. So these two different subnet may be operating on different protocols which are not compatible with each other. So network layer has a responsibility to route the packets from source to destination, mapping the different addressing scheme and the protocol. ठीक है, तो हो सकता है जो अलग अलग नेटवर्क्स में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हो रहा है. ठीक है, the number of devices connected in network is also different. Okay, so in that case also this network layer have to route the packets from source to destination. So the network layer in short manages the routings of these packets from source to the destination by using the different addressing and the mapping protocols. So that is the basic regarding this network layer. Then we'll see the functionalities of this network layer or the functionalities offered by the network layer. तो फर्स्ट फंक्शनलिटी जो है वो एड्रेसिंग डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स. तो जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट है उनको एड्रेसिंग और नेटवर्क को एड्रेसिंग प्रोवाइड करना. सेकंड, पॉपुलेटिंग राउटिंग टेबल्स एंड स्टैटिक रूट्स. ठीक है, so these are related to the protocols used in the networking. ठीक है, so in routing table में
जो भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस मेनली डिनोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्यूइंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा देन फॉरवर्डिंग देम अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ सर्विस कंस्ट्रेंट सेट फॉर दोज पैकेट्स, ठीक है। तो जो भी फ्रेम से या डेटा, ठीक है, लाइन में होगा दैट इज इन अ क्यू, सो फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा in that case forwarding them according to the quality of services, ठीक है। तो इस डेटा को according to their priority or the quality of services, this data will be sent to the destination accordingly. नेक्स्ट वन, इंटरनेटवर्किंग बिटवीन टू डिफरेंट सबनेट्स, ठीक है। तो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, ठीक है, फॉर द राउटिंग ऑफ पैकेट्स। नेक्स्ट वन, डिलीवरिंग पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन विद द बेस्ट एफर्ट, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि डिलीवरी ऑफ पैकेट टुवर्ड द डेस्टिनेशन दैट इज ऑल्सो अ मेन फंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड द कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस मैकेनिज्म। तो नेटवर्क लेयर जो है वो दोनों सर्विसेज ऑफर करेंगी, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस मैकेनिज्म। सो दीज आर द मेन फंक्शनलिटीज ऑफ दिस नेटवर्क लेयर। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम IPv4 एड्रेसिंग का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।